औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5 पार्ट 2 सॉल्व करना है। ये लेक्चर नंबर 65 है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए हम सॉल्व करें ग्रेड 10 मैथमेटिक्स यानी क्लास 10 के मैथमेटिक्स और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है, फाइंड m if the roots of the equation x square plus 7x plus 3m minus 5 equal to 0 satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta equal to 4। तो ये इससे पहले हम क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं और वो बिल्कुल इसी तरह का था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले लेट करना है, लेट अल्फा बीटा, लेट अल्फा एंड beta are the roots of the given equation। Then सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट्स, अब आप देखिए कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास x है। तो ये मैं यहां पर आपको हाईलाइट कर देता हूं। सो दिस इज b, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है, दिस इज c। और एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो हमारे पास a की वैल्यू है, दैट इज 1, यहां पर हमारे पास a है। हम यहां पे लिख भी लेते हैं, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 3m माइनस 5। तो ये सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना। सम ऑफ रूट्स, sum of roots is equals to alpha plus beta and this equal to minus b over a and this equal to minus b की वैल्यू 7 है, 7 over 1, so this is minus 7। so यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया -7 एंड दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। तो इसे हम बॉक्स में कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने आगे यूज करना है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आप निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ roots, this equal to alpha beta and this equal to c over a and this is c is 3m minus 5 over 1। so alpha beta हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अल्फा बीटा is equal to 3m minus 5। so ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। this is our equation number 2। so this is equation number 2।
नाउ बीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, पुट द वैल्यू बीटा हियर. व्हाट इज बीटा? बीटा की वैल्यू पुटिंग बीटा equal to -7 minus alpha in the above equation. In the above equation, we get alpha into -7 minus alpha is equals to 3m minus 5. So इसे सॉल्व करते हैं, we get -7 alpha minus alpha square is equals to 3m minus 5. सॉरी, ये बीटा की वैल्यू आपने ये जो ऊपर इक्वेशन गिवन है यहां पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे. ये जो हमारे इक्वेशन गिवन है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4. तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर. ये जो अल्फा की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 पुट की है, इक्वेशन 1 निकाली है, इसको हम यहां पुट करेंगे 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4. तो यहां पुट करते हैं यूजिंग द रिलेशन now. Using the relation क्या है जी? 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4. दिस इज द रिलेशन. पुटिंग ये रिलेशन देख ले, ये कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने. 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4. 3 alpha minus 2 beta equal to 4. So this is 3 alpha minus 2 beta equal to 4. Now putting alpha is equal to -7 minus beta in this relation, in the above relation, we get 3 अल्फा की जगह हमने पुट करना है -7 माइनस बीटा minus 2 beta equal to 4. So we get -21, 3 7 21, minus 3 beta minus 2 beta, and this equal to 4. So this is -21 minus 3 minus 2 minus 5 beta, this equal to 4. So 21 को हम यहां से 21 को उठाते हैं और हम इसको ले जाते हैं, सॉरी ये सही सर्कल कर लेते हैं. इस 21 को यहां से उठाते हैं और हम इसको इस साइड पे ले आते हैं. सो वी गेट -5 बीटा is equals to 4 plus 21. Now -5 beta is equal to 25, and this implies beta equal to -5 उधर जाकर डिवाइड होगा 25 over -5, and this equal to -5, ये कैंसिल हो गया, 5 5 is 25. So beta equal to -5. ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई. सो ये हमारे पास बीटा आ गया. तो अब हम अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज अल्फा? Alpha is equals to, now
अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा. सो दिस इक्वल टू बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दे, -7 माइनस माइनस प्लस 5. सो दिस इज -7 माइनस दिस इज -2. सो अल्फा भी हमारे पास आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -2. ये अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई. सो अब हम इसको पुट कर देते हैं, हमारा जो हमारी इक्वेशन है, सॉरी जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम उसको पुट करते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग अल्फा is equals to 2 and beta is equals to -5 in equation 2. Equation 2. So what is equation 2? That is alpha beta is equal to 3m. Check कर लेते हैं. This is 3m minus 5. So this is 3m minus 5 minus 5. So what is alpha? Alpha is 2. And what is beta? This is -5 and this is 3m minus 5. So this is -10. This is equal to 3m minus 5 and this implies 5 को इस 5 को यहां से मैं उठा के तो इधर ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड. So we get -10 plus 5 equal to 3m. So this is -5 equal to 3m and this implies m is equals to -5/3. तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है और ये हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाती है. सो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं ताकि हाईलाइट कर दें कि ये हमारी वैल्यू सोल्व हो गई. सो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया. तो इन द एंड दिस इज द मैसेज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.